Hey guys, it's good to see you back on Jen's Creative Corner. Diagonal fold कार्ड ट्राई किया या नहीं? घर पे खाली बैठे बोर होने से बेटर है कुछ क्रिएटिव ही ट्राई कर लो. The video link is available in the cards above. Do watch it and share with me on my Instagram page. I eagerly wait for your responses, ideas and creative efforts. अगर आप मुझे खुद ट्राई करके अपने कार्ड की फोटो या वीडियो भेजोगे तो मैं उसे डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. For this video, I have brought you a very unique card that is going to make you smile instantly. We call it an emoji pop-up card. But before we dive in, please subscribe to this channel and press the bell icon so you'll get notified whenever I post a new video. I have a small surprise for my viewers, but उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक वेट करना पड़ेगा. Stay tuned. As usual, let's have a look at the material required first. जल्दी से कुछ कलर शीट्स निकाल लो. वही वाली जो बच गई होंगी जब आपने स्कूल प्रोजेक्ट या कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाया था. नेक्स्ट यू विल नीड अ पेंसिल एंड अ रूलर. अब क्राफ्ट वर्क करना है तो कटिंग करने के लिए सिजर्स और चिपकाने के लिए ग्लू तो चाहिए ही होगा. यू कैन यूज फेविकॉल, फेविस्टिक और एनी अदर ग्लू अवेलेबल. और डेकोरेशन करने के लिए स्केच पेन्स, कलर पेन्स, स्टिकर्स, आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो. ओके नाउ, बहुत सारी कटिंग करनी है आज. Lot of prep work. We will require one square of side 11 cm and one square of side 10 cm. Next, you need to cut out 4 circles of diameter 4 cm. ये circles yellow होने जरूरी हैं. Next, you need to cut out 4 squares of side 5 cm in 4 different colors. और इन्हीं 4 colors के आपको rectangles भी cut करने हैं size 5 cm by 10 cm के. Let's have another look at all the shapes and sizes required. अब जब प्रेपरेशन हो गई है तो लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल कार्ड मेकिंग. टेक वन ऑफ द 4 रेक्टेंगल्स एंड फोल्ड इट इनटू हाफ. अब फिर से हाफ फोल्ड करना है बट सिर्फ एक साइड को. नाउ यू नीड टू अप्लाई ग्लू बट सिर्फ बाहर के हाफ पर, जस्ट लाइक आई हैव डन इन द वीडियो. अब जो सेम कलर का स्क्वायर है वो यहाँ पेस्ट करना है. One emoji stand is ready. Similarly, prepare the other 3 stands also. अब stands को base पे चिपकाना है. Place all 4 stands on the 10 cm square in a way that all of them open outwards. We want that all emojis should face outwards. इसलिए सब stands बाहर की तरफ ही खुलने चाहिए. Once we have all set the stands, we can paste them with glue. और ये लो, आपका बेसिक इमोजी पॉपअप कार्ड रेडी हो गया. अरे एक मिनट, इमोजी पॉपअप कार्ड में इमोजीज तो लगाए ही नहीं. चलो इमोजीज बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप में. You can draw your favorite emojis and smileys on the yellow circles using sketch pens. Smileys तो yellow ही होते हैं ना, इसीलिए जरूरी था circles का yellow होना. If you don't have yellow color paper, use white and then color it yellow. अगर आपकी ड्राइंग भी मेरी तरह कभी कभी गड़बड़ हो जाती है तो पहले पेंसिल से ड्रॉ करके तसल्ली कर लेनी चाहिए. Now paste these emojis on the 4 stands. बस लास्ट स्टेप रह गया, इस कार्ड को एक बेस देना. सो हियर वी विल यूज द 11 cm स्क्वायर. अप्लाई ग्लू ऑन द बॉटम ऑफ द कार्ड एंड पेस्ट इट ऑन द बिगेस्ट स्क्वायर, लीविंग आउट हाफ cm मार्जिन ऑन ऑल साइड्स. और हो गया आपका इमोजी पॉपअप कार्ड बिल्कुल तैयार. Now for the surprise. From my next video, I will be giving out shout-outs to the best comments of the viewers. I will try to include the best comments on a video in the next video in the series. So don't forget to comment down your thoughts, ideas and suggestions. Try to make this card और मुझे Instagram पे भेजना मत भूलना.
If you like the video, don't forget to subscribe to my channel and please watch these other videos from Jain's Creative Corner. Thank you so much for stopping by. Stay tuned till the next video. Till then, Jai Jinendra.